So from today onwards, I will be talking about random variables. So though the name is random variable, but nothing is going to be random in nature, right? You will find. Okay. Yes. But only the experiment that you will conduct is the random experiment. But after getting the outcome of the experiment, once you assign one random variable, right? What is this random variable? So everything become, you can say deterministic, right? So you can do all the maths and all whatever you have learned. Yes. So please confirm once if somebody has joined so that, yeah. So, so here what I'm supposed to talk about is, I'll talk about various things. I'll talk about, you know, uh, you can say random variable here, and I'll talk about discrete random variable, right? Initially, I will start with the discrete random variable, right? And discrete random variable will be corresponding to the discrete sample space, right? If you have the knowledge about, yeah, good morning, Akshay. So if you have a knowledge about discrete sample space, right? So, you know, that is the discrete random variable I'm going to talk about, right? So for discrete sample space, discrete random variable; for continuous sample space, continuous random variable, right? So, and I will tell you the idea and the definition. Okay, what is the idea behind this, and what is the idea of the random variable? Why we need this, right? And then the definitions. What is the random variable, right? So these are things that I will talk about. Okay. So discrete, why we call it discrete? Because discrete means the variable which I'm gonna take, okay, is going to take only the discrete values, you can say, right? Discrete or countable set, right? Discrete or countable set, okay. And in this, under this discrete random variable, we'll talk about important function that is called probability mass function. Okay, so we'll talk about here the probability mass function, right? Probability mass function, right? Okay, the probability mass function. Okay, why we call it probability mass function? Also, I will explain you. Probability mass function, right? Okay. So for discrete random variable, there is a probability mass function PMF. क्या कहते हैं हम लोग इसको? PMF. You can say PMF, right? In short. Okay, PMF. Okay, PMF. Remember, for continuous random variable, we will talk about various things, like we'll talk about probability distribution function, probability density function, so on and so forth, right? And here I'll talk about various examples of random variable, right? Okay, so I'm gonna talk about the random variable examples, you can say, right? Random variable, I'm just giving you the outlines what I'm supposed to talk. Random variable examples, you can say, like first will be the Bernoulli, okay, Bernoulli, and second is going to be the uniform random variable, uniform. Okay, third is going to be your binomial, and fourth is going to be your geometric. Okay, and Gaussian random variables, so many things, right? Gaussian random variables and all, right? And there will be some of the statistics as well, okay, related to these, like center tendencies. We can say, we know what are the major center tendencies, measure of center tendencies. We talk about mean, we talk about standard deviation, we talk about variance, right? Okay, so related to this random variable, we are going to talk about expectation, or we call it mean or expectation, both are same. Okay, so how to determine mean of any random variable? Suppose we have got the discrete random variable, and how can we determine, okay, the expectation or a mean, right? I think in general, if observations are given, so you can find the mean, median, mode, right? So these words will be related with the statistics, but here I'm gonna deal with the probability, right? So random variable is going to make your entire life mathematics and very easy also, right? Okay, so basic probability is quite difficult, right? Let me tell you, okay.
But you know, this part is going to be very very simple. But most of the people like who are from computer science and engineering, you know, they find this topic difficult, but the logic is very simple, right? Logical topic like probability. For electronics and electrical engineering people, you know, this topic is going to be very simple because we are, you know, uh, we like to do mathematics a lot, right? ठीक है. So random variable ये सारे रहेंगे. We'll talk about Gaussian random variable as well, normal distributions, so many things, right? Just I'm briefing some sort of a thing. So expectation, right? I'll talk about expectation, right? Expectation. Expectation we call it, or you can say mean and its property. Okay, expectation or a mean and its property, right? Okay, so what is the mean? Mean कैसे compute करते हैं, right? ये सब याद रखना एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो आपको मैं जैसे ऐसे बता रहा हूँ, आपको वही फॉलो करना है. यू विल से सर, you know, I can compute mean and anything, right? Okay, so we'll talk about expected value rule. What is the how to compute that, and so on and so forth, right? Fine. So let us talk about random variable definition. What is this random variable, guys? Let me tell you. Random name is there, right? Sometimes what happens now, people who create this theory, right? Okay, they make it they make it mathematical. Everything is mathematics. You are able to, you know, do everything, right? You are able to mathematically do. Okay, but name is random, right? But nothing is going to random in future. Random experiment you do, that is random. Okay, till sample space everything is random, but after the sample space, once random variable comes into picture, everything will become okay, right? So Pawan is asking, sir, when calculus starts. So do we start calculus right now without finishing this probability? Okay, so as I said, that I think you're not in the group. Okay, you should be in the group, right? So I have informed already that we are going to finish this topic and then we will start the calculus, right? Very shortly, guys. Don't worry. Okay, so this let us start. So I can't say which date. Okay. Uh, this topic is important, let me tell you, right? So please get excited, and you can expect that, you know, before November 10 everything's gonna be finishing, right? Mathematics. Okay, tata, bye bye. So don't worry. Okay, fine. So, you know, what is the definition here? How we define this, right? So we'll talk about definition of the random variable, definition of RV, random variable definition, right? The formal definition, right? So now remember, the very first definition that I'm gonna tell you is, see, a random variable, okay, associates a value, okay, to every possible outcome. So whatever outcome you have got, suppose any random experiment you have done, right? Okay. So what is this random experiment? You know, you have got the random experiment, you can say RE, okay, random experiment RE, right? So once you conduct some RE, right, so what you're going to get? You're going to get some sort of outcome, right? So you can say example you can take is like, uh, you know, throwing you know, coin tossing. Okay, you can coin toss, right? So there will be two outcome, head and tail, right? Okay. So these are the outcome of the what? These are the outcome of the random variable. So not a random variable. These are the outcome of the random experiment, है ना? तो आप sample space बनाओगे. There will be a sample space. Okay. So this is a sample space where head is there and tail is there, right? So what I'm going to do here is I will be assigning some number to these outcomes. Yeah, I will be assigning some number. Okay, some number, any number you can say randomly. I will be assigning to these. You can say these. You know, these head or tail. I can say head is 2, tail is -2. We can say, right. So that number I'm gonna assign to these outcomes. Okay. Now these outcome can take any number. It means we are going to assign some variable to these outcomes. Okay, so that variable can take any number, right? So याद रखना, random variable associate with a number, a value, you can say value. ठीक है. So
or what kind of value, from where we are going to get those values to assign to these outcomes, वो real line से हम लोग करेंगे। तो जितने भी outcomes हैं याद रखना, outcome of the sample space है ना, we are going to put on the real line, ठीक है। आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस, पहले आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, हेड आया टेल आया, अब हम ये हेड और टेल को कहां पर रख देंगे, एक रियल लाइन में रख देंगे। रियल लाइन में तो आपको पता है निगेटिव वैल्यूज भी होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं, राइट। याद रखना कि आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी असाइंड, ओके, ऑन अ रियल लाइन, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक रैंडम वेरिएबल एक रूल हो जाएगा, यू कैन से इट इज जस्ट लाइक अ रूल, ओके, और यू कैन से मैथमेटिकल फंक्शन, ओके। तो अब देखो यहाँ पर, राइट डाउन फर्स्ट डेफिनेशन, रैंडम वेरिएबल आर बी, ओके, associates, okay, associate a value, right, a value is, value can be number, right, okay, same number, what kind of number, real number, to every outcome, to every possible outcome, whatever possible outcomes are there, okay, understood. So random variable associates a value, or you can say random variable assign a value to every possible outcomes, ठीक है। याद रखना ये बहुत सिंपल डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। So mathematically what we can say is random variable is a function, क्या, random variable is a function that you have to always keep in mind, okay, that is very very important, okay, okay. So how can we understand what is the function, what is function in mathematics, okay? What is function in mathematics? So you know function is nothing but what, if you give some suppose there is a, let me take one example, okay, suppose this is a weighing machine, right, weighing machine, you can say, right, kind of weighing machine, okay. And if you want to measure the if you want to measure what, the age of the, or you can say weight of the student, so what you will do, you will give the input to this age, right, input to this weighing machine, so what it will give you, it will give you some sort of a number, right, okay. So this number is what, kind of random number, right, okay, and suppose in, like you put me into the weighing machine, right, so what it will give you, it will give my weight, right. If you're going to put yourself, right, so this is kind of a function, right, okay. This w is what, it's telling you the relation between what, input and output, right. The function is what, if you give x, okay, if you give x, you can say, if you give capital X here, okay, or a small x, whatever, to this, so it will give you f of x, okay. So function is nothing but what, function, okay. Function is this, right, you're going to give some input to this, okay, you are assigning some variable, right, okay, and you're getting this kind of function, okay. So remember, mathematically, if I talk about mathematically, okay, random variable is a function, is a function, okay, function from sample space, to the real number, to the real number, right, okay. whatever sample space you will be having, जो भी sample space आपके पास रहेगा, ठीक है, याद रखना, जो भी सैंपल स्पेस आपके पास रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वी विल मैप टू रियल लाइन और रियल नंबर, ठीक है। अभी हम आपको बहुत सारे एग्जांपल देंगे तो समझ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। सो ये जो रैंडम वेरिएबल होता है, इट कैन टेक डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस वैल्यू, दिस रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी, दैट्स व्हाई आई सेड रियल नंबर will be having discrete values as well as continuous values, right? Okay, continuous means between 1 and 2 also you can assign, like 0.5, whatever, right? So remember, this random variable can take, okay, this random variable can take, okay, right, discrete or continuous value, discrete or continuous value, okay? So how, what is the notation that I'm gonna use in entire theory?
The notation for random variable is this. Random variable is going to be denoted by capital X. Random variable, see, a random variable. What I'm going to do here is I will be mapping, remember, I will be mapping entire outcome of the sample space on the real line. ठीक है, अब जो रियल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, राइट. इट कैन बी डिस्क्रीट नंबर, इट कैन बी कॉन्टिन्यूस वैल्यू, कुछ भी हो सकता है ना, माइनस प्लस वट एवर. So what I'm going to do here is I will be taking one variable, right, x, and x can take any value, right. Okay, ठीक है. So random variable will be denoted by a capital X. याद रखना क्या, random variable is going to be denoted by capital X. Okay, जो इसके साथ numerical value रहेगी, kind of numerical value, that will be small x. तो values को हम लोग हमेशा किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल x से, याद रखना. और रैंडम वेरिएबल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल X से. ठीक है. तो see, today is a Sunday, right? Everybody should join live session and interact with me happily, right? Understood? So random variable x, capital X, right? याद रखना हमेशा जहां भी कैपिटल X रहेगा that is random variable, right? Okay, and numerical value is gonna be the x, small x. ठीक है. So I think this is clear for all, right? Okay. So collection of all the possible outcomes I'm going to map on the real line, right? Okay, real line can be any number that you can take. Okay, understood? So we can have several random variable defined on a same sample space. We can have so many random variable on a same sample space, right? So please remember these points, right? So this is very important to keep in mind. So what we can do here is, suppose we have any sample space, just let me take some sort of a sample space. This is a sample space, right? Okay, and these are the outcomes. You can say this is A, right, and this is B, this is C, and this is G, right? You can say these are the sample space outcomes. Okay, understood? These are the sample space, right? and ये outcomes हैं. अब हम क्या करने वाले हैं, आप देखो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है. रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है या रूल है. ठीक है, अगर आपको कॉफी चाहिए तो क्या करोगे आप, यू विल गिव सम इनपुट, राइट. तो कॉफी मशीन एक फंक्शन हो जाएगा, राइट. ओके, इट इज जस्ट लाइक अ फंक्शन. ओके, तो ये समझ जाओ, ये एक सैंपल स्पेस है, ये तो आपको पता है. फ्रॉम वेयर वी गेट आउटकम्स, राइट, वी व्हेन वी कंडक्ट सम सॉर्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जब हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी आपका आउटकम आता है. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं गाइस, आगे की. तो you see here, this is going to be your what, you can say small x, right, small x, their values are going to be what values, random variable values, right. तो मैंने क्या बताया, नोटेशन क्या होगा रैंडम वेरिएबल का, कैपिटल एक्स. अब देखो इसका नाम रैंडम है लेकिन ये नाम सही नहीं है. अब नाम दे दिया गया, सो वी नीड टू टेक, राइट. उसको बोलते हैं मिसनूमर, राइट. जैसे मेरा नाम धीरज है, राइट, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर यू कैन से बहुत ज्यादा धैर्य है, पेशेंस है, राइट. तो मतलब मेरा नाम गलत है, राइट. तो आपको समझना है कि ये एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस तक सारा का सारा रैंडम होने वाला है. रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मतलब हेड आ सकता है, टेल आ सकता है. जैसे ही आप ए को असाइन करोगे, मान लो आपके यहाँ इस एक्स में वैल्यूज हैं, एक्स कैन टेक 5, एक्स कैन टेक 4 and x can take 3. These values x can take. Okay, you can think about it, right. So let me assign now. Suppose this a can be assigned to, this 5. Okay, now a can take 5, right, remember. Okay, and this b can take also 5, you can say. Okay, and c can take here 4, and d can take 3, right. Okay, so we have assigned here. Okay, understood? Okay, what we have done, we have assigned these all the sample space outcome we have assigned on a real line. ठीक है, so this is because of random variable. Okay, so ये assignment जो है, this is just a rule here. Okay, rule is there, some sort of a rule is there. Okay, so a is map to 5. Okay, b map to, you can say, okay, b map to 5 only. Okay,
So and C map to 4, D map to this. ठीक है. Or what we can do here is suppose we have got any known sample space. Suppose this is head and this is tail, right? And we have got the real line here. You can say this is 0 and this is 1, right? What we are going to assign here is we are going to say that this head takes 1 and this tail takes 0, right? Okay. So if somebody will ask this x, if you're going to input it to h, right? So this will give you 1. See here, are you getting my point or not? See, x is a function. What x is a function? You can take like this. This is a x, which is a random variable. If you're going to give h to this x, so it will give you 1. Okay, it will give you some value, right? This random variable is going to give you some value, right? Okay, that value can be anything, right? 1. Now if you give tail, so it will give you what? 0. So you can say that x of t is going to be 0. Okay. Understood? I hope this makes sense to all. How many of you understood this? सबको समझ आ रहा है क्या? So this sample, all the outcome of sample space are going to be assigned with some value. Yes. Nitali is asking sir, random variable का यूज कहां पर होता है? देखो, रैंडम वेरिएबल का यूज कहां पर होता है ये समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, आजकल सारे एक्सपेरिमेंट रैंडम है, राइट? वॉट एवर एक्सपेरिमेंट यू थिंक अबाउट, ओके, एवरीथिंग इज रैंडम. तो इन ऑर्डर टू डू समथिंग विच इज डिटर्मिनिस्टिक, राइट, है ना, सब कुछ रैंडम है. अगर आप रैंडम एक्सपेरिमेंट यू डू, ओके, एंड आउटकम यू गेट, राइट, if you assign some sort of a value to those random experiment those outcomes, right, तो आपका जो एनालिसिस है that will become more easy, right? That is what the thing is, okay? That is what the thing is. If you want to make everything mathematical and simple, okay, you are going to use random variable concepts, right? ठीक है, बस यही है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आप एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करोगे, मीन कैलकुलेट करोगे, राइट? किसी भी चीज का एक्सपेक्टेशन, ओके, किसी भी चीज का मीन, ओके. Because at the end of the day, what you're going to do, right, you're going to use some statistics and you are going to make some decision, right? So अगर आप mathematically decision make करते हो, so that will be far easier, right? Yeah. So future में आपको पता है why we are studying probability and all, just to make decisions, right? Just to find some sort of a inference, है ना? तो random variable का अभी यूज आपको सारा पता चलने वाला है धीरे धीरे. आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल, राइट? तो ये सैंपल स्पेस को आप डोमेन भी बोल सकते हो, ठीक है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स of the random experiment is going to be a domain. Is a domain. Now you are assigning on the all. Okay, so assigning real value to the all possible outcome of the random experiment or sample space is known as random variable. कितना इजी डेफिनेशन है, आप समझ जाओ. तो नोटेशन आप याद रखना, कैपिटल एक्स, वैल्यू स्मॉल एक्स, राइट? अब जैसे मान लो एक और लेते हैं, चलो ठीक है, एक हम यहाँ पर लेते हैं, मान लो कोई एक डाइस है, काइंड ऑफ डाइस, ओके. तो यहाँ पर S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है, S6 है, राइट? सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट? ये इफ यू थ्रो अ डाई, right, so you're going to get 6 possible outcomes, right? And now what you will do, you're going to assign these outcomes on the random. What we are going to do, you can say this is 1 2 3 4 5 6, right? So I'm just going to choose. What we will do here is, suppose this S1 is going to take this, S2 is going to take 2, okay, understood. S3 is going to take this, right? S4 is going to take 4, S5 is going to take 5, 6, like this. So we are going to assign. So this assignment is nothing but a random variable, right? So random variable x, okay, if you give input to this x, S1, so it will give you 1, S2, it will give you 2, right? Like this, okay. It is just like a function, right? Fine.
So I think this is clear for all, right? Okay. So what is function? Suppose you have got a random variable, some rule is given, right? You can say some rule is given, x square, right? X square is a rule, okay, or a kind of function. So what you can say, if you're going to give 1 here, it will give 1 only. If you're going to give -1, you're going to get you're going to get 1 only, right? You see, okay, understood. So this, x square is kind of a function only, right? So if you take the square of the random variable, it is still random only. You see, okay, two same outcomes are getting mapped to same real line, okay, same real line that you can see here, okay. So याद रखना, random variable is very number, okay, and so capital X is going to be what? Random variable, and small x is nothing but value taken by the random variable, okay, value taken by the random variable. I hope this makes sense to all. How many of you understood this? ये random variable का business क्या है? What is this random variable? Random variable is nothing but what? A kind of function or a rule, okay, which assigns real number to each possible outcome of sample space, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। तो बस इतना ही याद रखो, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं रैंडम वेरिएबल को, स्मॉल एक्स जो वैल्यू आप रैंडम वेरिएबल को दोगे, राइट, असाइन करोगे, बस वही है, ठीक है, ओके। ठीक है, it's a very simple concept that we can say. Let me take one more example just to explain you. अभी हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, अभी जस्ट आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहता है a coin is tossed twice, क्या? A coin is tossed twice, a coin is tossed twice, okay, okay, a coin is tossed twice, देखो कॉइन क्या है, 2 बार टॉस किया गया, याद रखना, ठीक है। अब जो रैंडम वेरिएबल यहां पर हम लेंगे, रैंडम वेरिएबल, व्हाट रैंडम वेरिएबल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, रिमेंबर, तो रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स, याद रखना, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स। तो अब देखो, इन्होंने बता दिया है कि रैंडम वेरिएबल यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेड्स। तो कैन यू असाइन values to the random can you assign values to the all the outcomes? अब देखो हमारे पास क्या क्या आउटकम्स होंगे आपको पता है, what are the outcomes guys? एक बार हम head और tail, then again we are tossing, so head and tail, right? So what are the outcome we have got? Head tail head and tail, right? तो मान लो क्या बोल रहा है यहाँ पर, रैंडम वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स, राइट। तो आप क्या करोगे, एच को, ये जो आउटकम है इसको आप रैंडम वेरिएबल से पास करोगे, क्या करोगे, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन उससे पास करवाओगे। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि हम रैंडम वेरिएबल को पास कर, जो हमारा ये आउटकम है इसको हम लोग एक फंक्शन से पास करवा रहे हैं, तो इट विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी स्मॉल एक्स, राइट। तो क्या हो जाएगा बताओ, कोई बताएगा क्या, व्हाट वैल्यू विल बी देयर, कोई बताएगा व्हाट इज दिस एक्स, स्मॉल एक्स हियर, यस, अच्छा है, प्लीज टेल मी। ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ तो बता सकते हो क्योंकि वो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, क्या मेंशन हुआ है यहाँ पर, रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स। तो आप देखो इसमें कितने हेड्स हैं, बताओ कितने हेड्स हैं, 2 हेड हैं, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, समझ आया क्या। तो अगर आप इसमें एक्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज बीइंग अप्लाइड ऑन एच, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, एंड यहाँ पर कितना आएगा 0। तो आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल, राइट। कितने लोगों को समझ में आ गया, अब पूरी तरह से क्लियर है मामला, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट गाइस, समझ आया ना, ये है कॉन्सेप्ट रैंडम वेरिएबल का, कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, आपको सीधा सीधा उसके अकॉर्डिंग चलना है आगे, लाइफ आपकी सिंपल है। तो कैपिटल एक्स जो है आपका पता चल गया, कैपिटल एक्स क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है,
कैपिटल एक्स 1 हो सकता है एंड कैपिटल एक्स 2 हो सकता है। तो अब आप जो ये रिपीटेड 1 1 है इसको बार बार नहीं लिखोगे, एक ही लिखो, ठीक है। दिस कैपिटल एक्स यू कैन से द बिजनेस इज लाइक दिस, स्मॉल एक्स कैन टेक व्हाट 0 1 एंड 2, राइट। समझ आया ना। तो ये मान लो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट था आपका, एच एच, राइट, यू नो एस टी टी एच एंड टी टी। तो आप इसको असाइन कर दो, एच एच को यहाँ पर असाइन करेंगे, टी टी को 0 से करेंगे, राइट, टी एच को 1 एंड इसको भी 1 से, राइट। आई होप दिस मेक सेंस, राइट। तो याद रखना द फंक्शन, आप कॉफी मशीन में यू नो you will put some sort of a sugar as not sugar, basically we don't use some coffee powder, whatever you say, right? I don't know because I like tea only, right? So आप क्या करोगे, milk डालोगे, you will get some coffee and then you will put some sort of a sugar if you want, right? So and you will stir it, right? वो स्टीयरिंग एंड ऑल तो अपने से करना पड़ेगा। तो ये मशीन है, फंक्शन इज अ मशीन, टेक मशीन गाइस, ये एक मशीन है। फंक्शन इज व्हाट, मशीन, राइट। यू गिव सम इनपुट, इट गिव्स यू द आउटपुट, राइट। रैंडम वेरिएबल इज आल्सो काइंड ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन वी आर टेकिंग, राइट, जिससे कि जो रैंडम चीजें हैं वो डिटर्मिनिस्टिक हो जाए, आपकी लाइफ थोड़ा सा सिंपल हो जाए। यू कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज देन, राइट, नहीं तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। समझ आया क्या? अब याद रखना हमें, ये एक आपको मैंने बता दिया सिनेरियो, ओके। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। अब मान लो हम एक और देखो ये सारी एग्जांपल्स हैं, वी विल ट्राई टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर, राइट। अभी मैं प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बस रैंडम वेरिएबल। मान लो 3 आउटकम्स आपके पास, मतलब 3 टाइम्स आप इसको टॉस करते हो। सेकंड एग्जांपल, second example you can take, repeat the same question, right? Repeat the same question, okay. If coin is tossed 3 times, coin is tossed thrice, so what you will get here is and remember this random variable is what, number of this random variable is going to talk about number of heads, okay? अब देखो कितना सिंपल है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, just go for this, right, head tail, no, head tail, head tail, right? So again you have to toss it, so head tail you might get head tail and head tail and head tail, right? So यहाँ पर 3 टाइम्स आप कॉइन को टॉस करो, एक बार टॉस किया हेड टेल आया, 2 बार टॉस किया हेड टेल आ सकता है, मतलब आप समझ सकते हो, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ we are doing all these things in stage wise, okay, sequentially we are doing, right? This is called sequential description or sometimes we call it tree diagram as well, okay। अब यहाँ से आप आउटकम कलेक्ट कर सकते हो, आउटकम ना कलेक्ट करके डायरेक्टली आप बता सकते हो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। रैंडम वेरिएबल एक्स यहाँ पर है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल एक्स होगा जिसमें स्मॉल एक्स की वैल्यू आपको बताना है, राइट। तो आप बता सकते हो यहाँ पर कैपिटल एक्स, आप यू आर अप्लाइंग सम रूल ऑन दिस ब्रांच, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा स्मॉल एक्स की वैल्यू, राइट, बिकॉज रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यू small x, right, that is 3। I think this is clear for all, yeah. So this is 2, then 2 only, okay, then 1, then 2, then 1, then 1 and then 0। How many of you understood this? ये कैसे मैंने लिख दिया, इसके एडवांटेज क्या है आपको पता चलेंगे अभी आगे चल के। As we move ahead you will get to know this। How many of you understood this? Please tell me fast। Yes guys, everybody understood this? Fine, let's move ahead।
ठीक है, ये याद रखना कैसे आप असाइन करते हो रैंडम वेरिएबल का ये कॉन्सेप्ट, राइट? फाइन। So let me talk about probability mass function, right? Okay, right now, right? So I'm just talking about discrete random variable at this moment. Okay, it can be continuous random variable as well, but since the sample space is discrete sample space, so we should talk about probability mass function, right? What is this probability mass function business, right? That we have to understand. Probability mass function, okay, or sometimes we call it PMF of a discrete random variable x। याद रखना, हम लोग पीएमएफ किसका निकालते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का निकालते हैं। डिस्क्रीट होना चाहिए, रैंडम वेरिएबल शुड बी डिस्क्रीट। इट मींस सैंपल स्पेस शुड बी डिस्क्रीट, ठीक है? मतलब वो एक सेट होना चाहिए, फाइनाइट सेट यू कैन से, राइट? अगर वो मान लो कॉन्टिन्यूअस है तो आई हैव शोन यू कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस एज वेल, राइट? जब आप किसी भी मान लो आपके पास कोई एक बोर्ड है एंड यू आर शूटिंग, यू आर हिटिंग समथिंग, राइट? हिटिंग, राइट? That is the continuous process, right? You don't know when you're going to hit the target, right? So we are going to assign one board there, right? And taking x and y, right? And then we say that, yeah, that is a continuous sample space, right? Because x can take value less than 1, greater than 0, y can take value. So if this kind of a scenario is there, right? So that is called continuous random variable, sorry, continuous sample space, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखो आप प्रोबेबिलिटी की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी लॉ की बात करेंगे, राइट? ओके, प्रोबेबिलिटी लॉ और समटाइम्स वी विल कॉल इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रैंडम वेरिएबल में, याद रखना। सो remember this probability mass function, or sometimes we call it point mass function as well, point mass function, right? है ना? इसको मास फंक्शन, देखो क्या होगा, सिनेरियो ऐसा होगा कि सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ, यू माइट हैव सीन इन योर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, राइट? कि मतलब कोई भी अगर मान लो कोई भी चीज है, अगर वो एट अ पॉइंट कोई भी फोर्स लग रहा है ऐसा, you see, this is a point where entire force is being applied. This is a point. So these are what? These are the mass, entire mass of an object is hanging at a point, you can see, right? Like this, ऐसा, ठीक है? इसीलिए इसको मास फंक्शन बोलते हैं बस, ठीक है? मास, क्योंकि पूरा जो मास है ना, मास ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी एट अ पॉइंट, राइट? यू सी लाइक दिस, ठीक है? आई थिंक यू माइट हैव सीन, राइट, इन मैकेनिक्स और समथिंग व्हेन यू आर स्टडीइंग फर्स्ट ईयर, राइट? तो फर्स्ट ईयर में आप सुने होंगे इस तरह का कॉन्सेप्ट, राइट? तो आपको ये समझना है कि इसको मास फंक्शन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है? ये एट अ पॉइंट देयर विल बी अ कंप्लीट ओके entire force, ठीक है? Fine. So the point first you have to understand what is this probability mass function, that you have to remember. It is a probability law. तो क्या बोलेंगे? It is a probability law. It is a probability law. It is a probability law. Okay. So I have talked about two kind of probability law, right? एक तो यूनिफॉर्म probability law मैंने बताया भी था आपको, ठीक है? और एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस के लिए प्रोबेबिलिटी लॉ बताया था, ठीक है? बताया था कि नहीं बताया था? आप लोग याद करो, ठीक है? और एक बताया था कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस के लिए प्रोबेबिलिटी लॉ, दैट वाज व्हाट? अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी लॉ फॉर कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस? मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे ट्रीट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ट्रीट प्रोबेबिलिटी एज अ एरिया, अंडरस्टूड? प्रोबेबिलिटी एज एरिया ओवर देयर, ठीक है? यहां पर हम प्रोबेबिलिटी लॉ को, आपको पता है कि यहां पर क्या करने वाले हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी देखेंगे। देखो, इट इज अ प्रोबेबिलिटी लॉ और यू कैन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एक्स, ओके? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एक्स, राइट? ओके, so what we are going to do here is, if we fix some small x, if we fix, if we fix some small x, right? Some small x,
then capital X is equal to small x is an event, you can say. ये एक इवेंट हो जाएगा, याद रखना। और किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। अगर मान लो कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स ले रहा है, क्या कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स वैल्यू ले रहा है, मतलब ये एक इवेंट है, यू नो, अंडरस्टूड, दिस इज गोइंग टू बी वन इवेंट, राइट। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड, रैंडम वेरिएबल। आप देखो वहां पर क्या हुआ कि जब व्हेन वी टॉस द कॉइन, राइट, सो वी टोल्ड दैट रैंडम वेरिएबल इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ हेड। you have to understand that random variable which is going to be assigned number of heads, right, मतलब वो एक इवेंट है, ठीक है। क्या है वो, एक इवेंट है। तो कैपिटल x इक्वल टू x इज व्हाट, इस काइंड ऑफ इवेंट, याद रखना। और किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, सबको पता है, ठीक है, आई थिंक सबको पता है, राइट। तो मान लो यहाँ पर ऐसा हम बोलते हैं कि सपोज स्मॉल x इज गोइंग टू बी अ 5, सो कैपिटल x कितना हो जाएगा 5, राइट। कैपिटल X इज गोइंग टू बी अ 5, ओके। तो हम इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल X यहाँ लिखेंगे। व्हाट इज दिस कैपिटल X रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट हियर, दैट इज अ रैंडम वेरिएबल, ओके। इट इज टेकिंग व्हाट, वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ, you know, you can say that x equal to 5, right, and it can be anything, right, it can be, you can say 1/2 or whatever probability is there, right। जब हम देखेंगे जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। तो कोई भी एक वैल्यू रहेगा कैपिटल एक्स का, उसकी हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। और x इक्वल टू स्मॉल x इज गोइंग टू बी एन इवेंट, is going to be an event, guys, remember, is going to be an event, ठीक है, understood। और as I said that it is a probability law, it is a probability distribution of x, ठीक है। so x equal to small x, so you know entire probability is going to be distributed at all the points, right, for all the points you can say। so it will follow the axioms of probability, है ना। जो भी बेसिक axioms हम लोग पढ़े थे probability में, जो बेसिक होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटीज आर नॉन नेगेटिव, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यू कैन से दैट हियर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन स्मॉल x इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। दिस इज फर्स्ट, ओके, दैट शुड बी फॉलोड, ओके। और अगर आप टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ओके, ओवर x, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। So sum of all the probabilities, right? Sum of all the probability is going to be 1. That everybody knows, right? So ये probability distribution, Nitali, just I have written this. See, right now we are not sure about what kind of experiment we are talking about, right? तो अभी मैंने ऐसे लिख दिया कि मान लो x इक्वल टू कोई 5 एक इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बस ऐसे ही, ठीक है। फ्यूचर में आपको जब आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट रहेगा, ठीक है, और देन वी विल टॉक अबाउट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल मान लो हेड है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, जस्ट वेट फॉर दैट, राइट। ये तो मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया है, ठीक है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल, या। तो देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, ये जो बेसिक एक्सियोम्स आप पढ़े थे, इनको आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ। तो पीएमएफ हमेशा पॉजिटिव होता है, इट कैन बी 0 और पॉजिटिव, रिमेंबर, याद रखना, पीएमएफ कैन बी 0 और पॉजिटिव। और उसका अगर आप टोटल ऐड करोगे, टोटल टोटल पीएमएफ टोटल प्रोबेबिलिटी अगर देखते हो, तो 1 आना चाहिए। जितने भी वेट्स आपके रहेंगे, मतलब दे विल बी एट अ पॉइंट, राइट, लाइक दिस 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 दिस, एंड अगर सारे को ऐड करोगे, उसके जो भी हाइट्स वेट जो भी कंसीडर करो, है ना, वो 1 आना चाहिए। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जिसका सैंपल स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। और ये जो सारे पॉइंट्स हैं, दे आर इक्वली लाइकली, ऑल पॉइंट्स आर इक्वली लाइकली, यू कैन से दैट। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? ऑल पॉइंट्स आर इक्वली लाइकली मींस व्हाट, गाइस? कैन समबडी टेल मी? ऑल पॉइंट्स आर इक्वली लाइकली. How many points are there? What are the probability of getting this outcome? First outcome you can say A.
Anyone? A, B, C, D. So can somebody tell me what will be the what will be the probability of each point? मतलब क्या होगा इस पॉइंट का probability क्या होगा A का? You can say these. I'm just going to write the probability. The probability here is 1/4, right? क्योंकि इक्वली लाइकली है, हाँ इक्वली लाइकली मतलब सबकी probability सेम होने वाली 1/4, right? अब that I'm going to assign these sample outcomes, okay, whatever outcomes are present in the sample space, to the real line small x. You can say this is the point which is 3, 4 and 5. Okay, so A is going to be mapped to 3 and B is also going to map to 3. C is going to be mapped to 5 and D is going to map to, like C is going to map to 4 and oh sorry, I should write like this. 1 minute. This is 5, 4 and 3. ठीक है, I think this is clear. 4, 5. ये समझ आया क्या ये चीज? मतलब just I have assigned some value to these unknown sample space. We don't know this sample space. What is this, right? अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि what is this suppose we want to find the probability of x equal to 5, right? ठीक है, मान लो कोई पूछता है कि probability of mass function capital X equal to 5. This is this 5 is nothing but small x, right? What is this? बताओगे क्या होगा? बता दो अब. So there are 2 points, right, which are going to be mapped to 5. That can be x equal to a, that A and B is there, right? A and B. तो A हो सकता है और B हो सकता है, A हो सकता है और B हो सकता है. आप बोल सकते हो यहाँ पर it will be 1/4 plus 1/4 which is 1/2, right? I hope this makes sense to all, right? Suppose कोई पूछता है what is the probability mass function, right? What is the probability mass function for x equal to 4? तो आपको इससे मतलब नहीं है. अब इससे you don't have to worry about what now the sample space and all. Since you have got x values, you can quickly find out x equal to 4 क्या होगा. How many outcomes are being mapped to this x equal to 4? That is only 1, right? So you can say that will be 1/4. ठीक है, and probability mass function x equal to you can say 3 is going to be 1/4. So I think this is clear, right? So ये आप probability mass function you can find out. That is called probability distribution function. So what you are distributing the probability for all the random variable, right? So 1/4 was the probability of each outcome of the sample space. Now you're going to distribute it to, this probability is gonna get distributed on the random variable. ठीक है, तो आपको याद रखना ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात है और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, याद रखना. दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ओके, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यू कैन से, एंड दिस स्मॉल एक्स, राइट? तो मैंने क्या बोला, मास फंक्शन. मास का मतलब क्या होता है, दिस इंटायर मास इज गोइंग टू बी एट अ पॉइंट, ऐसे, राइट? एक पॉइंट में कैसे, यू कैन इमेजिन, राइट? तो मान लो ये पॉइंट, ये 3 है, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. तो यू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कितना है? 1/4. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गाइस? सेम है, 1/4. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गाइस? इट इज 1/2. ठीक है, तो अब इसको अगर टोटल करते हो, ऐड करते हो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, तो अगर आप इसका सम करते हो तो कितना आ जाएगा? 1. एंड यू कैन सी हियर ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर पॉजिटिव. कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी जो निगेटिव हो. आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल. तो आप कैसे असाइन करते हो सैंपल स्पेस को रियल नंबर में, राइट? मतलब यूजिंग रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल इज गोना बी अ रूल और अ फंक्शन. फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद आप इसको उसमें मतलब एक प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो, राइट? एंड प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप प्लॉट कर पा रहे हो तो ये काफी अच्छा लग रहा है. अगर मान लो ये प्लॉट आ गया तो आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. और ये 3, 4, 5 आर दी रैंडम वेरिएबल्स, राइट? सम नंबर्स, राइट? 3, 4, 5 आर व्हाट? द नंबर्स वैल्यूज टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल, राइट? आई होप दिस मेक्स सेंस. ठीक है, कितने लोगों को समझ आया? सब कोई पूछता है मान लो यहाँ पर क्वेश्चन कि सर
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 5? क्या बताओगे यहाँ पर? मान लो ये आपके पास दिया हुआ है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन is given, this probability mass function plot is given versus x, small x, right? And someone is going to ask you what is the value of x equal to 5, तो क्या बताओगे आंसर? बताओ। x equal to 5 का मतलब क्या है? x equal to 5 means they are asking only the value at one point, right? The probability of x at a point they are asking, that is 1 by 2. सिंपल, ये जो वैल्यू यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी की, वही आंसर है। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल, राइट? सो ये सब याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल। कितने लोगों को समझ आ गया? प्लीज टेल मी फास्ट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस, या? Okay, so this is going to be, guys, the probability mass function. This is a probability law, right? Probability mass function. Okay, please remember this. Very good, very good, very good. Okay, so ये discrete random variable के लिए है. This is for just a discrete random variable. Very good. ठीक है? Probability mass function, right? At a point we are able to find the probability. ठीक है? लेकिन याद रखना कि when I will talk about you can say continuous random variable, तो अगर कोई पूछता है what is the probability at a point, so probability at a point is going to be 0, guys, right? For continuous random variable. क्यों? क्योंकि continuous random variable में आपको पता है कि area under the curve, right? area is a probability, and you know what is the area of, what is the area of the point? Area of the point is gonna be 0, right? I hope this makes sense. So ये concept केवल valid करता है आपके you can say this is only valid at what? Only valid at, okay, please remember this. Let me take one more question, because after all we have to understand the question only, right? More questions. So we are going to learn the kind of yeah. Suppose we have got a tetrahedral die and two rules are there, right? Two rules of a tetrahedral die. थोड़ा सा अलग die लेते हैं. Let every possible outcome have a probability. Let every possible outcome have probability. What? 1 by 16. 1 by 16, right? So there will be 16 points in fact. So total, you can say all points are equally likely, right? So every possible outcome have a probability 1 by 16. तो ये दिया रहेगा, ठीक है? ये सब दिया रहेगा. Now what is given here is that, तो आप बना सकते हो, पहले आप सैंपल स्पेस देखो, यहाँ पर सैंपल स्पेस आपका कुछ ऐसा रहेगा. तो x इक्वल टू यू कैन से फर्स्ट रूल एंड ये y इक्वल टू यू कैन से सेकंड रूल. ठीक है, तो यहाँ पर कितने बाई कितने का मैट्रिक्स रहेगा? ये 4x4 का रहेगा, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. ठीक है, 4x4 का मैट्रिक्स रहेगा. तो यू कैन से दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, and you can say this is going to be 1, 2, 3, 4. I think this is clear, right? So you guys can decide what is this. ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, राइट? सो अब यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है. देखो, there are two random variable, you can say x is one random variable, y is one random variable, right? X is one random variable, y is going to be second random variable, but they have given one more random variable, that is z, and z is nothing but x plus y. Yeah, z is nothing but x plus y. Okay, z is nothing but x plus y. Okay, please remember z is nothing but x plus y. तो मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो ये सम है, सम ऑफ आउटकम्स, राइट? सम ऑफ आउटकम्स इज गोइंग टू बी अ न्यू रैंडम वेरिएबल, राइट? X is one random variable, you can say in first roll, okay, you can say you got 1, in second roll also you got 1, तो उनका दोनों का समेशन क्या होगा? 2 होगा. तो ये जो सम है is a new random variable z, right? You can say.
ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टोल्ड यू, राइट। ठीक है, तो you have to repeat for all z, right? So here suppose this is going to be first one, your first region is going to be what, this is going to be 2, right? You can feel it, right? I think ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4, this is 5, right? I think this is clear here. 3 4, right? This is going to be 5 6, okay, and this is I think 4 5 6 7, and if you're going to start from 5, so 5 6 7 8, I think this is clear for all. Yeah guys, how did I fill this entire matrix? I think people have understood. ठीक है, सबको समझ आया ना ये चीज? तो मान लो कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ z, कैपिटल Z इक्वल टू 2, दे आर आस्किंग, राइट? याद रखना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यस, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा पूछा जाएगा कि ये जो z है, z इक्वल टू 2 मैंने असाइन कर दिया, राइट? z इक्वल टू 2, तो आपको क्या प्लॉट करना था यहाँ पर? आप सिंपली प्लॉट कर सकते हो, प्लॉट हियर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, राइट? ये कैपिटल Z है, राइट? कैपिटल Z एंड स्मॉल z इज द वैल्यू टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल कैपिटल Z, और कैपिटल Z, हाउ यू आर गेटिंग कैपिटल Z? बाय समिंग x एंड y, राइट? बाय समिंग टू आउटकम्स x एंड y। तो ये x यहाँ पर क्या लिखेंगे? Z लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, maximum 8, and you can say 9 as well, no problem, right? But 9, probability of getting 1 is 0, right? ठीक है, probability of getting 1 क्या है यहाँ पर बताओ? 0 है। probability of getting 1 is 0, probability of getting 9 is 0, right? Okay, I think this is clear. हाँ, probability of getting 2 कितना है बताओ? Z equal to 2, tell me guys. So there are two things, right? 1 and 1, right? So you can say that 1 by 16, okay. What is the probability of getting this? 2. Anybody? What is the probability of getting Z equal to 2? Anybody? Can somebody tell me here? What is the probability of getting 2? Z equal to 2. How many 2's are there in this entire picture? 1 by 16. Very good, right? Yes, 1 by 16. Very good. What is the probability of getting 3? So there are how many 3's you see? One by 16 plus 1 by 16, right? That is gonna be 2 by 16. Okay, and then 4 का देख लो इसको ऐसे 5 6 7 8. It's a very simple process, right? I think you guys can compute, right? And you guys can draw it. I think everybody understood this. सबको समझ आया क्या ये चीज? बताओ fast. You can plot it, right? So it is very simple process. ठीक है. So at 5 it will be maximum, you can say here. You can say this is 4 by 16. It is going to be 3 by 3. This is 2. This is 1 by 16. फिर यहाँ पर सेम आ जाएगा. And like this. ठीक है. Going to be symmetrical about 5. Okay. I hope this makes sense to all, right? So ये चीज याद रखना, probability distribution, like probability mass function, right? ठीक है, probability mass function. Okay. देखो probability mass function, or sometimes we call it probability. देखो probability mass function is basically known as probability density function in case of continuous random variable.
कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लोग उसको बोल देते हैं, राइट, ठीक है, याद रखना। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और समटाइम्स वी कॉल इट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ओके, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल पीएमएफ से भी लिख सकते हैं, कैपिटल पीएमएफ, नो प्रॉब्लम इज देयर, राइट, याद रखना, ओके। तो बट देयर विल बी वन मोर फंक्शन, याद रखना, वी कॉल इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। Probability distribution function and probability mass function both are different, याद रखना, okay? Probability distribution function and probability mass function both are different, ठीक है। तो okay, in order not to differentiate हम लोग probability density function ही बोल देते हैं, चाहे वो discrete हो या कि you know suppose we are in studying these, we are using this concept in our engineering, तो हम लोग फिर वहां पर ज्यादा differentiate नहीं करते, लेकिन ये probability mass function है, kind of probability mass function, right, fine। तो कितने लोगों को समझ आ गई ये चीज, आज का जो सेशन है, मतलब जो भी स्टार्ट किया रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, तो कितने लोगों को मजा आ गया कि हाँ सर ये तो अब लग रहा है कि हाँ लाइफ में थोड़ा सा सिंप्लिसिटी है, ठीक है, बताना फास्ट, जिससे कि मैं और क्वेश्चन कर पाऊँ, ठीक है, ओके। तो गाइज अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही आप बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर continuous discrete random variable, or you can say probability density function, but probability density function is better to use to be useful for for continuous random variable, right? So what is this probability distribution function? Probability distribution function, or probability distribution function, or we call it cumulative distribution function, cumulative distribution function। याद रखना, इसको हम लोग कैपिटल पीडीएफ से डिनोट करेंगे, ठीक है, जस्ट टू डिफरेंशिएट थिंग्स, इसको हम लोग पीडीएफ से करेंगे, पीडीएफ, और वी कॉल इट सीडीएफ, कैपिटल पीडीएफ और कैपिटल सीडीएफ, यू कैन से क्यूमुलेटिव। हाँ, शिवम इज सेइंग 20 मिनट का सेशन किया, मजा आ गया, वेरी गुड शिवम। देखो चीजों को आप ऐसे, आप पूरा सेशन देखोगे ना, यू विल से वो रैंडम वेरिएबल इज वेरी सिंपल थिंग, राइट, इट्स अ फंक्शन। मैथमेटिक्स में जो हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं ना, एक फंक्शन है बस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अब देखो क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी ही है, दिस इज आल्सो अ प्रोबेबिलिटी, राइट, और हम एक इवेंट डिसाइड करेंगे, वी विल सी द इवेंट, ओके। तो हाउ डू वी डिफाइन दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये याद रखना। तो कोई भी रैंडम वेरिएबल है, मान लो कोई भी रैंडम वेरिएबल, यू कैन से एनी रैंडम वेरिएबल, यू कैन से सपोज कैपिटल एक्स इज रैंडम वेरिएबल, ठीक है, सपोज दिस इज कैपिटल एक्स, okay, any random variable small x, you can say, okay, this is a real line, okay, if any capital X can take value, okay, if any capital X can take value, right, you can fix some value here, small x, if any capital X can take value less than this small x, okay, it can take any value less than this small x, right। देखो अब कंटिन्यूअस का केस आ रहा है, राइट, कंटिन्यूअस का, कि अगर मान लो x, कैपिटल X कोई वैल्यू है, मतलब कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, दैट कैन टेक एनी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स, ठीक है, क्या कैपिटल एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, दैट कैन टेक एनी वैल्यू लेस देन स्मॉल एक्स। तो यहाँ पर इवेंट क्या है, इवेंट इज कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द इवेंट, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी हो सकता है ना, ठीक है, मतलब आप यू कैन टेक एनी वैल्यू लेस देन स्मॉल एक्स, ठीक है, याद रखना, समझ आ रहा क्या, कोई एक वैल्यू x है, एनी वन वैल्यू यू टेक x, if your random variable can take any value less than or equal to small x, that is the event, and if you are going to define the probability of this event, याद रखना, if you are going to define the probability of this event, you can say probability of x less than or equal to small x,
वी कॉल इट कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं CDF और PDF, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर ऑल। समझ आया क्या ये चीज? जल्दी बताना। x लेस देन आर इक्वल टू स्मॉल x, उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, दैट इज गोना बी द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। तो ये x लेस देन x क्या होता है? इट इज अ इवेंट, और आपको पता है कि इवेंट की ही हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, इट्स अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? मान लो कोई पूछता है कि व्हाट इज द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x एंड दिस रैंडम वेरिएबल टेक्स 10, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X टिल 10, राइट? आपको पूरी क्यूमुलेटिव फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब यू हैव टू टेक ऑल द वैल्यू लेस देन 10, मतलब आपको किस सब की सारी प्रोबेबिलिटी को क्या करना है? ऐड कर देना है। यू हैव टू फाइंड क्यूमुलेटिव, ओके। यू डोंट हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? लेस देन 10 तक की प्रोबेबिलिटी आपको ऐड करना है, राइट? तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये ऐसा बोल रहा है कि एक ये वैल्यू 10 है और यहाँ ये सारी प्रोबेबिलिटी आपको कंप्यूट करना है, ठीक है। सपोज कोई बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ कैपिटल एफ। याद रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, मतलब ये जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, राइट? ठीक है। Yes, PDF less than 10, not PDF. It's a probability less than 10. Probability of the event X less than 10, right? It is a distribution function, right? F of X at 10, right? So if someone is going to ask you, what is this, suppose somebody is saying that X1, what is probability of probability distribution function X at x1, like, okay, so it will be nothing but a probability only. It is a probability, right? X less than small x 1. So this distribution function is a kind of probability, right? It is a probability, right? That's it. It is a probability where random variable takes the value less than x. Till less than x you have to consider, okay, till x1, okay, from minus infinity to x1 you come down. मान लो आपके पास, लेट अस टेक वन concept here. I believe this is fine for all, yeah? How many of you understood this? It is a distribution function, it's not a mass function. Remember, mass function हम लोग क्या बात करते हैं? mass का मतलब at a point हम लोग देखते हैं, बस at a point, right? mass function means at a point. आपका कितना force at a point acting है, entire force is acting at a point, that is mass function. ये distribution है, ये पूरे कैंटिलीवर में कितना फोर्स लग रहा है आप समझ सकते हो। मतलब आप इफ यू आर सिटिंग हियर, हाउ मच फोर्स, पूरा फोर्स लगेगा, राइट? यू हैव टू कीप इन माइंड लाइक दिस, मतलब जस्ट थिंक, ओके। तो आप 10 से नीचे बैठ गए तो मतलब ये पूरा का पूरा फोर्स आपका इसमें लगा है, इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? इंटायर फोर्स यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज व्हाट, all the point you are going to consider, less than the whatever random variable is taking, all the point less than that value, particular value, right? Okay. But if someone is going to ask you what is the probability at certain point, right, x equal to something, तो वो क्या है? मास फंक्शन है, ठीक है, मास फंक्शन है। एंड मास फंक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, नॉट फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, याद रखना, ठीक है। Suppose we have got a dice, right? Suppose we have got a dice. You take one dice, right? If you take one dice,
एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डायस, अगर आप किसी भी डायस को थ्रो करते हैं तो what are the what are the value that random variable is going to take? See, in case of throwing a dice there is a value, so I'm going to assign one random variable over there. So capital X की वैल्यू आप बोल सकते हो क्या क्या है, कैपिटल X की वैल्यू आप बोल सकते हो, कैपिटल X में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, right? After all, the outcome of the throwing a dice is a value only, so you can just assign capital X. X can take 1 2 3 4 5, right? Now if I ask you what is the probability of capital X, ठीक है, ठीक है, it is just a probability mass function I'm talking about, probability mass function, remember, ठीक है, ये probability mass function है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, probability mass function, ठीक है, it's not a probability distribution function, please remember guys, it's a probability mass function and it is only defined for what, मतलब डिफाइन क्या, ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब कुछ वैल्यूज आएंगी, राइट, ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो उसमें प्रोबेबिलिटी अगर आप कैलकुलेट करते हो एट सर्टेन वैल्यूज, सो दैट विल बी जीरो ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि वहां का प्रोबेबिलिटी लॉ डिफरेंट है, वो एरिया में डिपेंड करता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बोलते हो तो क्या है बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू x, स्मॉल x इज द इवेंट हियर, तो 1 by 6 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 okay, so if I try to find here, what if someone is going to ask you what is the probability of x less than 1, क्या बताओगे यहाँ, बताओ, what is the probability of x less than 1, less than or equal to 1, कितना हो जाएगा, 1 by 6 ही होगा, right? I think this is fine for all, yeah. So you have to also take the probability of from minus infinity to 1, right? Everything is going to be 0, okay? I'm just going to plot it, guys. Plotting is very simple to understand, right? So ये capital X है, आप बोल सकते हो कि this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 5 6, right, like this. Now see, I'm just going to choose some color here so that you guys can understand. यहाँ पर क्या रहेगा, till this point, from here to here it is going to be 0, right? I mean, and then there will be a jump like this, okay, understood? Then again this is kind of what, 1 by 6, right? You can say this is nothing but f of x small x, right? Capital F of x is small x, right? So what we are doing here is less than 1, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड करना है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, if x is taking value less than or equal to x, तो till x you have to accumulate all the probability, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई पूछता है कि what is the probability of x less than 2, कौन बताएगा, जल्दी बताना, what is the probability of x, probability of x less than 2, anybody, what is the probability of x less than 2, what is the probability of x less than 2, that is nothing but what they are asking, probability of 2, sorry, ये जो distribution function है, that is, yeah, that is going to be 1 by 6 plus 1 by 6, very good, अच्छा है, that is going to be added, right? तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो probability distribution function है, ये never decreasing, right? It will be go on increasing like this. लेकिन मास फंक्शन आप देख रहे थे कि वो डिक्रीज भी होता है, इट इज इंक्रीजिंग समटाइम्स, डिक्रीजिंग समटाइम्स, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इट विल नेवर डिक्रीज, इट विल बी ऑलवेज गोइंग टुवर्ड डेस्टिनेशन। तो आपका जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इट शुड बी लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो आप पूरे नॉलेज को क्यूमुलेट करते रहो और सीधा आप ऊपर ही जाओ, नीचे नहीं, डोंट कम डाउन, राइट? तो सी हियर इट इज अ इट विल बी लाइक दिस, यहाँ जैसे ये सेम रहेगा till 2 इट विल बी सेम, till 2 इट इज सेम, बट
अब क्या होगा, 2 में जंप हो जाएगा, राइट, देयर विल बी अ जंप एट 2, यू कैन से लाइक दिस, इट इज नथिंग बट 1/3, then again there will be, it is like this, then 3 में jump, 4 में jump. What is the maximum, guys, tell me? What is maximum at 6? कौन बताएगा at 6? What will be the probability of capital X less than 6, less than or equal to 6? ये क्या हो जाएगा? Remove this from here. Capital X, small x. ये क्या है? This point. That is 1. Yeah, 1. That is total probability, right? तो ये क्या है? This is kind of a staircase connection. Okay, staircases. Okay, stair, kind of stair is there, right? kind of stair you are getting. Okay, so probability density function आपका कैसा दिखेगा? Step by step. I think step function you might have gone through in your mathematics. Step kind of function, right? Okay, yeah, step by step, and you see it is never decreasing, non-decreasing function. So probability distribution function is not decreasing function, not never decreasing, right? It will, आप क्वेश्चन में देखोगे पूछेगा कि whether it is a valid probability distribution function, तो आपको देख लेना है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है मतलब that is not the probability distribution function, right? So probability distribution function is defined for both, right? Probability density function is defined for we call it probability density function for continuous random variable, and for probability mass function for this, right? Okay, अब मान लो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इफ यू वांट टू प्लॉट इट सिंपल, तो ये क्या, अब क्या प्लॉट आएगा इसका, बताओ व्हाट इज द प्लॉट हियर? सपोज गोइंग टू आस्क समबडी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर दिस, so probability mass function PMF, though I should put it a small letter but it's fine, right? No problem. Probability mass function, probability mass function capital X equal to small x, this is probability mass function, right? So it is simply, right, 1 2 3 4 5 ये रहेगा यहाँ पर ऐसा. I think everybody can understand this, yeah? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. How many of you understood this? अगर आप इसका सबका सम करते हो तो you will get 1 again. Everyone understand this? So how does probability mass function look like, and how does probability distribution function look like? Probability distribution function will be going always up up up. Yeah. मान लो in this question, suppose this is a question, okay? Whatever we have drawn here, right? You just put all the values here. Okay, I don't have any problem. Okay. Let me copy this and ask many questions from here. Okay. You will be given this kind of function, suppose. Okay. Just I'm copying this guy. Copy and paste somewhere here. If suppose someone is going to ask you what is the probability of, like what is the probability distribution function at 0.2, इसका मतलब क्या होता है? probability of capital X less than 0.2. याद रखना. The meaning of this is nothing but a probability X less than that, okay, less than that event, yeah, that 0.2. so 0.2 कहाँ पर आता है? 1 से लेस है, मतलब probability कितनी है बताओ? What is the answer, guys? जल्दी बताना. अब now 0.2 we are considering, right? It means we are going to consider, like if you take any value, okay, like 0.2 0, okay, though discrete will be always 1 2 3 4 5, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस की बात करते हो, इफ सपोज x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो आप सारी वैल्यू कंसीडर कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 0. अगर मान लो कोई पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो याद रखना इसका मतलब कुछ नहीं होता 99,
which is also 0. Okay, I think this is clear for all. Yeah. Fine. So you can find anything. Someone is going to ask you priority distribution function at 2.999, right? So 2.99 मतलब 1/6 ही होगा. 3.9 मतलब that you have to always keep in mind. This is very important to keep in mind. Yeah? कोई पूछता है what is the distribution function at 6? कितना, इसका मतलब क्या है? What is the priority of x less than 6, which is 1. Okay. Now let us take some example. Suppose we have got a question here and we have to draw the priority mass function, you can say, right? Priority mass function, okay? Or you can also say priority density function, right? No problem. Since the sample space is discrete, so we must say priority mass function, but we don't want to create lot of disturbances like confusion and all. तो हम लोग कभी कभी to be specific priority mass function is fine, ठीक है? Priority mass function याद रखना, finding priority at a point. And priority distribution का function का मतलब होता है priority of finding priority for any point less than or equal to x. Okay, remember random variable taking the value, all the value, okay, till x, that is called the distribution. And mass का मतलब होता है at a one point, you can see, right? Okay, you can think about like if you are applying some force at a point, that is priority mass function. Distribution का मतलब होता है कि पूरे बीम में फोर्स लगा रहे हो till certain. Okay, how many of you understood this? सबको समझ आया ना? तो जहां भी समझ नहीं आता, you can always ask. A coin is tossed twice. Okay, so I'm not gonna take again, right, the same experiment that I have taken. Let me copy that guy and paste here. Okay, क्योंकि आप लोगों को तो लिखना थोड़ी है. Let me take this entire story, right? Example ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और इसी का हम लोग मास फंक्शन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, क्यों टाइम स्पेंड करें लिखने में, राइट, जब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल हैं. So just we are going to paste here. Yeah. ठीक है, चलो. तो ये तो समझ आ गया था गाइस आपको, ये वाला. A coin is tossed twice, random variable represent number of heads. चलो आ जाओ. अब मान लो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, that we have to see. What are the values we have got? Capital X is nothing but 0, 1 and 2, right? Don't take 1, 1, 2 times. Remember, don't take 1, 1, 2 times. 1 आपका 1 two outcome of the sample space is going to map at a same random variable. No problem is there. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ऐसा हो सकता है. So many to one is possible, but one to many is not possible. Remember, one to many to one is possible. ठीक है, मतलब many outcome can be mapped to one single random variable. That is okay, but single random variable should not be given to, मतलब बहुत सारे so many random variables should not be given to single outcome, you can say, right? So head should not be given to like assigned to 5, 6, 7, ऐसा नहीं होना चाहिए, right? That is very important, right? So remember, okay, many to one, right, from sample space to a random variable is fine, right? But from random, like from real line, many numbers from the real line to single outcome is not possible. Many, okay, vice versa. Fine. So अब यहाँ पर अगर कोई पूछता है व्हाट इज द प्रायोरिटी मास फंक्शन, कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, बता दो भाई. स्मॉल एक्स यहाँ पर क्या था बताओ, व्हाट वाज द स्मॉल एक्स? स्मॉल एक्स वाज दिस ओनली. I think you should not face time, you should not face difficulty. Capital X, small x क्या होता है? Small x is the value taken by the random variable, right? So what are the value that random variable is taking here? 0, 1, 2, right? Because since we have defined here the random variable represent number of heads. ठीक है, तो 0 random variable मतलब 0 heads हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी बताओ जल्दी से. तो टेल आ रहा है, मतलब क्या है?
टेल, राइट? सो टेल का मतलब होता है 1/2 into 1/2, दैट इज गोना बी 1 by यू नो 1 by what, 1/4, ठीक है, ये 1/4 हो जाएगा. व्हाट इज 1? 1 में क्या हो रहा है कि 1, दिस 1 इज नथिंग बट टेकिंग STTH, एंड ये तो टेल था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज नथिंग बट 1/4. एग्जैक्ट टेल, राइट? एग्जैक्टली टेल इज कमिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्ट 1/2 into 1/2. यहाँ पर इधर केस है ST और TH, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 1/2 एंड यहाँ पर भी 1/4 आएगा. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? कितने लोगों को समझ आ गई ये चीज? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? नाउ यू कैन प्लॉट इट. ओके, सिंपली प्लॉटिंग तो बहुत सिंपल है. ये स्मॉल x है, स्मॉल x, यू नो दीज वैल्यूज आर 0 1 2. 0 में 1/4 था, तो मैक्सिमम इज दिस 1/2. ये 1/4 है, ये 1/4. It's a probability mass function, guys. Right? Mass function, you can think about it kind of point mass function. Sometimes we call it point mass function, right? All the force is applied at a point. How many of you understood this story? Done? Can you draw the probability distribution function as well? Yes. कोई पूछता है what is probability distribution function in this case? So you can say yes, I can draw it. You can take x equal to, you know, probability of x, small x, you know, 0 1 2, and ये है आपका 1/4, 1/2 and 1/4. Let me plot here probability mass function, probability distribution function f of x, small x. You can say this is nothing but you know, starting with 0 onwards, like, so this is 0 1 and 2, you know, till 0 you can say, right? Okay, before 0 if you see, that is going to be probability 0, but at 0 there is a jump, you can say 1/4, but less than 1 अगर आप बात करते हो, exactly less than 1, strictly less than 1, so it will be 1/4 only, right? But at 1 there is a jump, right? So again there will be, you can say there is a 1/2, because you will be adding, right? 1/4 plus sorry, 1/4 plus 1/2 कितना होता है? 1, can somebody tell me what is 1/4 plus 1/2? 1/4 plus 1/2, you have to add it now, because 1/2 is next. So 1/4 plus 1, cumulative, you know, distribution function is nothing but cumulative distribution 1/. So it is going like this, then it is reaching 1. ये कितना हो जाएगा? Can some 3/4, 3/4 at 1. Perfect. So from the distribution function you can get the density function as well, I mean mass function. Suppose this is given, so how can you get this? How can you get the probability mass function from this? Okay, the probability mass function is nothing but what? ये 0 है, this is 1, this is 2. So at a point कितना force है यहाँ देखो, you can say 1/4. At 1 कितना है? You see, this is the, you know, this is the difference that you have to calculate, right? So what is this difference? That is nothing but 1/2. Difference between these two, right? These 2 points, that is going to be the strength of this okay, jump, right? So, and this is going to be, what is the difference? 1/4 again, right? So you see, so if you have been given density distribution function, right, so you can get the mass function. If you have got the mass function, you can plot the distribution function, and distribution function is never decreasing guy, right? Non decreasing guy, remember, right? Non decreasing, it will never decrease. ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, okay, I think this is clear for all. How many of you understood completely? अगर मान लो क्वेश्चन में डिक्रीजिंग दिया है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है, इट विल बी ऑलवेज गोइंग अप एंड अप, ओके, मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, so let us talk about some of the properties
प्रॉपर्टीज ऑफ पीडीएफ, राइट, पीडीएफ, राइट। तो अगर मान लो रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, राइट, तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो, राइट, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, राइट। ओके, डिस्क्रीट के केस में भी आप कर सकते हो, डिस्क्रीट में भी आपको दिख रहा है कैसा आएगा, राइट। तो प्रायोरिटी ओके, ये डिस्क्रीट के लिए हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, कंटिन्यूअस की तो अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। डिस्क्रीट ही है ना, रैंडम वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट हियर बिकॉज लेस देन एक्स, ओके, लेस देन एक्स और इक्वल टू एक्स वी आर टेकिंग, so ये डिस्क्रीट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। people don't talk about this but I have introduced, right, ye step kind of, okay, so I think you might have studied this kind of function in mathematics, okay, like there is a jump, like kind of greatest integer functions, when we will talk about that we will see, okay. Fine, so some properties, let us go through properties of capital PDF or capital CDF. Capital PDF or CDF, if I say, that is nothing but distribution function, guys, right? Okay, that is nothing but distribution function. Okay, so number one is nothing but what? If someone is going to ask you what is the range of this guy, range, you know, it always lies between 0 and 1. Okay, okay, remember, it always lies between 0. Since it is a probability, it follows the probability of probability axioms, right? So it will be always, okay, second. If someone is going to ask you what is the value at infinity, so it is going to be 1, right? इसका मतलब क्या है? This is nothing but probability of x less than infinity, that is 1 only, complete. Okay. I'm not gonna use this, right, all the time. अगर आप definition wise चलोगे तो what is the definition of probability distribution function? That is capital F of x is going to be equal to probability, right? Capital X taking the value small x. Random, all values that random variable is taking till x is called the distribution one, right? Okay, please remember that. So ये distribution function is just like a probability. The maximum it can be 1, the minimum it can be 0, right? Fine. So yes. Now if somebody is asked what is f of x minus infinity, that is going to be 0. It is an impossible event, you can say, right? Okay. Third is capital PDF or CDF is always increasing. You can say is always increasing function. Increasing function, right? Always increasing function. Suppose someone is going to ask you what is the probability of capital X greater than small x1 any point. Suppose it is asked like this, probability of capital X greater than, you can say this is nothing but 1 minus probability of x less than small x. इसको आप बोल सकते हो probability of minus f of x small x, right? Okay, this is very important property. Okay? मतलब मेरा कहने का है कि probability of x greater than small x is nothing but 1 minus, right? 1 minus total minus probability of x less than small x. तो इसको क्या बोल सकते हो? It is the definition of probability distribution function. Yeah. Okay. So Shivam is asking mass function का range क्या होता है? Here just you watch that what is probability mass function that I have told you, right? Okay. Probability mass function की two properties I have told, right? That follows the axioms only. Okay. Probability mass function is always positive, that you have to keep in mind, right? Always positive, keep in mind. Okay. Always positive. Okay. And probability mass function, if you add all the probabilities which are existing at a point, तो 1 आना चाहिए total, right? So
we don't talk about range over there. We just talk about, they are always positive, right? In this case, probability distribution functions are always increasing functions, right? Here we don't talk about positive or negative. It is always increasing, right? Or and it is true also, it is always positive only, because since the values are lying between 0 and 1. Yeah. Suppose somebody is asking, guys, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. वो somebody is asking that what is the probability of capital X, and capital X is taking a value now, uh, X, capital X greater than X1 and less than X2, right? What they are asking is, this capital X is taking value, all values less than X2 but greater than X1. ठीक है, इसको आप कैसे करोगे? This can be written as, first of all, you start with X2, right? You start with this from the definition, minus you subtract this, right? Subtraction is going to happen X. And the last property, which is very important, is suppose somebody is asking what is the probability of capital X at X1, right? The distribution function at X1, it is going to be nothing but probability of distribution function X1 minus the probability of X1 minus, right? You can say, okay, like previous value, you can say you have to subtract. ठीक है, ये बहुत important है. These are the property that you have to remember, right? Fine. Okay. How many of you understood this completely? कितने लोगों को समझ आ गया, बताना फास्ट. Whatever we have discussed till now. Yes. Understand? Fantastic. अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, दैट इज डिफाइंड फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. सो इफ x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ओके, वी विल कॉल इट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, याद रखना. तो अगर मान लो x इज अ रैंडम वेरिएबल विच इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ओके, इफ कैपिटल X इज अ कंटिन्यूअस RV, अगर कैपिटल X कंटिन्यूअस RV है, like it can take any value, right? It is not like that it will take finite set of values or something, right? डिस्क्रीट का मतलब आपको समझ आता है, सेट जिसको पता है तो समझ जाता है. तो यहाँ पर हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात करते हैं. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम लोग डिस्क्रीट के लिए बात करेंगे, राइट? तो प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड द डिफरेंसेस, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यू कैन से प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ पर जो लॉ आएगा, याद रखना, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स द लॉ इज गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट? लॉ विल बी द व्हाट? एरिया अंडर द कर्व, राइट? एरिया. ठीक है, तो वहां पर क्या था? समेशन था. जब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हम लोग सब सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे थे, देयर वाज अ समेशन. हियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रहेगा, तो व्हेन वी विल टेक द इंटीग्रेशन ओवर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देखो वहां सम था, देखो सम फॉर डिस्क्रीट एंड इंटीग्रेशन फॉर कंटिन्यूअस. ये डेंसिटी फंक्शन के लिए रहेगा. सम फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब मास फंक्शन के लिए वी यूज सम, एंड डेंसिटी फंक्शन के लिए वी यूज दिस. ओके, सो इफ वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, राइट, so integration under the curve, area under the curve is going to give you the probability, right? Okay, तो याद रखना यहाँ continuous random variable के लिए probability law change हो जाता है, that is nothing but area. Okay, I have told you also, है ना? तो probability density function, सिंपल सा डेफिनेशन है गाइस probability density function का. Probability density function is nothing but
small f. Okay, we denote like small pdf, right? So it is nothing but, okay, it's nothing but differentiation of okay, differentiation of what, CDF. क्या CDF का डिफरेंशिएशन होता है क्या, CDF का डिफरेंशिएशन PDF इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट? याद रखना, CDF का डिफरेंशिएशन PDF, आप CDF बोलो, CDF या कि कैपिटल PDF बोलो या CDF बोलो। तो अगर आपके पास प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, यू जस्ट डिफरेंशिएट इट, यू विल गेट द प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट? तो small PDF is just a differentiation of capital PDF और CDF, right? ये डेफिनेशन है बेसिक। अगर आपके पास कोई कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है, एंड इफ यू वांट टू फाइंड डेंसिटी फंक्शन, सो सिंपली डिफरेंशिएट इट, है ना? डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ाएंगे मतलब बेसिक डिफरेंशिएशन, राइट? आई थिंक मैनी ऑफ यू माइट बी फैमिलियर आल्सो, राइट? तो आपको डिफरेंशिएशन का पता होना भी चाहिए। मान लो आपके सिलेबस में नहीं है अगर, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन इंडिकेट्स? तो प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन इंडिकेट्स, ये बेसिक डेफिनेशन याद रखना। Priority density function indicates, you can say that small PDF, right, indicates. Look here, I'm denoting this small f, right, x. This shows the random variable and this is the value taken by the random variable, right? Remember, ये capital X हम लोग नीचे लिखते हैं और small x को argument के अंदर, right? So उसको हम बोलते हैं that small x is taking the capital X, the value taken by the capital X is going to be small x, right? Fine. So this indicates basically, PDF indicates that indicates the distribution of total probability. Okay, distribution of total probability. Whatever you have got, total probability will be always 1, right? So you have to distribute the total probability, okay, to various random variable, to various random variable. Okay. Various random variable. I think this is clear for all, yeah? वेरियस रैंडम वेरिएबल, जितने भी रैंडम वेरिएबल रहेंगे सबको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ये प्रोबेबिलिटी, उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी फंक्शन, राइट? कंटिन्यूअस में बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स रहेंगे, राइट? दे आर नॉट डिस्क्रीट, राइट? सो दे आर इनफाइनाइट सेट, राइट? बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स होने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्मॉल PDF? याद रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉल PDF सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल PDF और डेंसिटी फंक्शन यू कॉल इट। तो पहला क्या रहेगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एरिया अंडर द डेंसिटी फंक्शन। एरिया मींस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f of x dx equal to 1, राइट? याद रखना, इट इज नथिंग बट टोटल एरिया इक्वल टू 1, राइट? इट मींस दिस इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी, यू कैन से, राइट? ओके, टोटल एरिया। तो मान लो आपके पास डेंसिटी फंक्शन दिया है, ओके, एंड यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी टू कंप्यूट सम ऑफ द अननोन प्रेजेंट इन द डेंसिटी फंक्शन। मान लो डेंसिटी फंक्शन आपके पास दिया है कोई भी, ठीक है, और उसमें कोई भी अननोन है और आपसे पूछा है कि इस अननोन की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ओके? एरिया अंडर द कर्व इज गोइंग टू बी 1, सो इंटीग्रेट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है? सेकेंड प्रॉपर्टी इज, सपोज कोई पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन स्मॉल x, ठीक है, x1 you can say. What is this? It is not a density function, remember, it is not a density function, it is a probability. It is not the distribution of the probability, total probability, right?
It is not the distribution of total probability, guys, right? It is a probability, right? Probability of some event x less than equal to x. इसको हम लोग probability distribution function बोलते हैं, you know, f of x small x. ये क्या हो जाएगा जब आपके पास डेंसिटी फंक्शन गिवन रहेगा? तो हाउ टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी याद रखना. तो आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो यू आर गेटिंग व्हाट, द डेंसिटी फंक्शन. तो अगर आपको इनवर्स, व्हाट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन? एनीबॉडी कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन? और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हियर द x इज अ रैंडम वेरिएबल, राइट? दैट इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. इफ यू वांट टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, राइट, so what we have to do, we have to calculate the area under the curve, right? area under the curve, ठीक है? तो आपका जो रेंज ऑफ विजन है दैट इज स्टिल x1 है, इसके नीचे तक हमें निकालना है. दिस इज कैपिटल एफ. व्हाट इज द इनवर्स प्रोसेस? या इंटीग्रेशन. ठीक है, फाइन. तो इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा. कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से लेके x1 तक. और इसके अंदर क्या रहेगा? डेंसिटी फंक्शन रहने वाला है. ये है प्रोबेबिलिटी. दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, राइट? एरिया अंडर द कर्व, राइट? एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, गाइस, राइट? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी ओनली, राइट? अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी, राइट? ओके, ये याद रखना. फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू दैट. Okay, suppose third property is, suppose someone is going to ask you what is the probability of capital X less greater than x1. तो इसको आप सबसे पहले लिख सकते हो 1 minus less than small x, which is nothing but 1 minus f of x x1. and इसको आप क्या लिख सकते हो? You can say that it is nothing but starting from x1 to infinity, right? 1 minus f of x means you start from x1 to infinity f of x dx. आप डायरेक्टली भी बता सकते हो कि आप सीधा x1 से, मतलब मान लो आपके पास कोई ऐसा एक डेंसिटी फंक्शन दिया है, मान लो ऐसा, ठीक है? इट इज अ डेंसिटी फंक्शन f of x. आई एम नॉट सीइंग व्हाट काइंड ऑफ डेंसिटी फंक्शन इज दिस. वेट, सपोज यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x ग्रेटर देन x1. तो आप क्या करोगे? x1 मान लो यहाँ पर है, ये जो एरिया होने वाला है इट इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? इसका एरिया. तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना पूरे फंक्शन को x1 से लेके इन्फिनिटी तक. ओके, मान लो ये तुम्हारा x2 है, राइट? तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x2, तो आप क्या करोगे? ये वाला एरिया फाइंड करोगे माइनस इन्फिनिटी से लेके x2 तक. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट? ओके, सो एरिया अंडर द डेंसिटी फंक्शन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. क्या? एरिया अंडर द डेंसिटी फंक्शन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, राइट? याद रखना. मान लो ऐसा सिचुएशन है कि suppose you have got kind of a curve and this is x1 and this is x2. So suppose they are asking what is the probability of random variable, you know, x taking the value greater than x1 and less than x2, right? x greater than x1, right? मतलब x से greater और x2 के बीच में. तो क्या हो जाएगा? ये x1 to x2 this area f of x dx. Simply you have to, you know, simply you have to what? You have to integrate between these two intervals, right? x1 and x2. तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा. तो एरिया अंडर द डेंसिटी फंक्शन इज नोन एज प्रोबेबिलिटी. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? अगर डेंसिटी फंक्शन दिया है, लिख लो, हिंदी में लिख सकते हो. अगर डेंसिटी फंक्शन दिया है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन सर्टेन इंटरवल, तो आप इंटीग्रेट करोगे डेंसिटी फंक्शन को. याद रख कर लो, राइट? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में. तो गाइज ये सारी चीजें आज के लिए हमें लगता है काफी हैं. ठीक है, आज का जो हमारा था. फिर हमें आगे बात करना है टाइप्स ऑफ डेंसिटी फंक्शंस, यू नो, लाइक यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शन, बर्नौली, बहुत सारी चीजें हमें बात करना है. वी हैव टू टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन, वी हैव टू टॉक अबाउट, यू नो, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, और बायनॉमियल की भी बात करेंगे. बायनॉमियल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ और यू कैन से मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल हम लोग फाइंड करेंगे, राइट? जैसे
Yes, yes, yes. Evening में होगा. That is the reason I'm just going to wrap up here. So I hope you guys might have enjoyed the session. And if you have any sort of doubt, please ask. ठीक है. कोई doubt है क्या? Yes, guys. If you have any sort of doubt, you can ask. Okay, thank you guys, and we'll catch up in the evening. Take care, and I believe you guys will come live. Okay, लाइव आओगे तभी मजा आता है, नहीं तो काइंड ऑफ रिकॉर्डेड सेशन में तो मैं नहीं पढ़ा पाता प्रॉपरली, राइट? यू कैन सी, मतलब जो चीजें मैं आपको अभी बता पा रहा हूँ इंटरेक्शन करके, वो मैं रिकॉर्ड में नहीं कर पाता. रिकॉर्डिंग मतलब आपको फिर एक पीपीटी होनी चाहिए, हर चीज उसमें मेंशन हो और आप बस रिकॉर्ड कर दो. और लाइव के सेशन में आपको एक एक चीज हमें समझाना पड़ता है, तो उसमें हमें मजा खुद आता है, राइट? सो आई ऑलवेज लर्न, राइट? टेक केयर. गुड बाय.